Hi guys, welcome back to the channel. This is me Mubin and you're watching Car Rebuilders. In this video, we are going to rebuild this beautiful 2022 Nissan Magnite. It has been involved in a major accident. Right now, the denting and painting process has been completed. As you all can see, it's looking beautiful. And it's time to put all the parts back into the car. So let's get started. Give you a quick update what's going on right now. So we have completely installed the rear trims, right and left both side, and moving on towards the front side. क्या कर रहे हो पापा आप? इसके नए वाले एयरबैग के साथ साथ सीट बेल्ट्स भी आ चुके हैं, तो हम लोग तो ये सीट बेल्ट लॉक हो चुके हैं पूरे कंप्लीटली सामने के दोनों तरफ. पीछे वाला ABS वाला एयरबैग वाला सीट बेल्ट नहीं आता है तो अनलॉक भी है, ये वाले मगर लॉक हो चुके हैं. Now these are waste things, let it be. And यहाँ पर आ चुके हैं नए वाले, ये नए हैं. कौन बॉक्स किया जा रहा है? साइड का भी लग चुका है पूरा कंप्लीटली. अभी बारी है फॉर द लेफ्ट हैंड साइड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी लेफ्ट एंड राइट साइड के कंप्लीट रिम्स इंस्टॉल हो चुके हैं. नेक्स्ट है अभी डैशबोर्ड की बारी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी तक का काम ये हो चुका है कि सामने का बम्पर आ चुका है पेंटिंग सेक्शन से. तो अभी ये टेम्पररी लगा हुआ है बम्पर सामने का. अभी हम लोग उसको परमानेंटली फिक्स करेंगे. नीचे से पूरा फेंडर लाइनिंग दिख रहा है तो ये पूरा कम्प्लीटली फिट होएगा. साइड में फेंडर क्लैडिंग्स आएंगे यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड. हेडलाइट्स परफेक्टली लग चुके हैं. इट इज़ आवर कैट
एंड लेट्स गो टू द इंटीरियर सेक्शन. इंटीरियर में सब कुछ लग चुका है सिवाय इंफोटेनमेंट सिस्टम के, वो पेंडिंग है अभी आना. और यहाँ पर स्टीयरिंग लगना बाकी है और डोर्स में अभी डोर पैड्स लगाना बाकी है. रीज़न वाई वी आर शॉपिंग दैट इज़ बिकॉज ऑफ दीज हैंडल्स. जस्ट लुक एट दीज हैंडल्स. ये डैमेज हो चुके हैं एक्सीडेंट के टाइम पे. ये ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस हो चुका है, वो आज इवनिंग तक आ जाना चाहिए. अगर वो आ जाएंगे तो आज डोर पैड्स भी लग जाएंगे और इंटीरियर कम्प्लीटली लग जाएगा. ये सिर्फ नीचे की फ्लोरिंग क्लीन करना है और सीट्स को इंस्टॉल करना है, तो गाड़ी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी. Let me give you a quick update what's going on right now. In the rear section, they are installing the seats. See, so they are installing the seats, and we have replaced the all four door handles. These are brand new ones. And in the interior section, we are waiting for the infotainment system. It hasn't arrived yet, and there's a problem in front, as you are seeing that this shade of red is different, this shade of red is different. So the painter have painted the wrong shade of red, and now it's looking really bad. So again we have to remove this bumper, and he will paint it again, and then we have to again install it back. So I am not going to install this fender cladding. Why? Because afterwards also again I have to take out that. And from the left hand side again it's left with the cladding, and I have to stick this is a it's just going to stick. I have to stick it on the right hand side, this Nissan Magnite logo, and on the right hand side also these door handles are also replaced. And I have to check this 360-degree camera, how does it works on this Nissan Magnite, because there is a camera here also, and two cameras on the side mirror. So we are waiting for the infotainment system. Someone has stolen it when it had an accident. Someone has stolen with the couplers. So there are no couplers also, and we are waiting for the couplers and the infotainment system. And yeah, that's it for now. And let's start the work. I am going to replace this part. Why? Because it has damage here and here with this new one. Okay, right now what we are doing is we are going to change this alloy wheel. Why? Because it has got damage on the outer side of this alloy wheel. So, and we have brand new ones. So he's going to open it, and let me show you the other ones. This one, it doesn't have any damage on the alloy wheel. So we are going to change this one, and this over here. Finally the car is completed now, and it's looking so beautiful. Just look at it. And if you like this type of content, make sure you like, share and subscribe. And if you want to work us on your car, so DM us on Instagram, and we will contact you soon then. Bye bye.